फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वॉन्ट्स क्राफ्ट। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दहीहंडी स्पेशल वीडियो। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही स्पेशल। तो चलिए देखते हैं। तो मैं अभी पेंसिल से ड्रॉ कर रही हूँ कुछ, उससे ध्यान से देखिए। एंड तो चलिए, बहुत बड़ा वीडियो है तो मैं बीच में म्यूज़िक डाल दूँगी, ठीक है। आप देखते चलिए कैसे मैं बना रही हूँ, ओके। लाइन खींच रही हूँ। वो लाइन किस चीज़ के लिए मैं बता दूँ आपको। ये लाइन जो कृष्ण जी की बांसुरी रहती है उसके लिए है। तो मैं बना रही हूँ वही बांसुरी का लाइन बना रही हूँ। तो देखिए कैसा बनाती हूँ, ठीक है। अभी मैं स्केच पेन ली हूँ और जो मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया था उसके ऊपर मैं पेंसिल को चला रही हूँ। और वैसा ही मैं पूरा जितना भी मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया है उस सब पे मैं ऐसा स्केच पेन ब्लैक कलर का चलाऊंगी, ठीक है। You show up thirsty, staring at me like I can do something for you. You lick your lips, you think you're slick. You stalk like I'm a piece of meat. You're trying out and showing off, so flashy, don't do jack for me. You're such a troll, out of control. I wish I could just hit delete. Why?
फ्रेंड्स अभी मैं पेंसिल से उसके वो जो हमारी मटका रहता है उसके ऊपर का जो भाग रहता है वो मैं बना रही हूँ। एक्चुअली मैं ना बीच में भूल गई थी, तो इसके लिए मैं अभी बना रही हूँ वो। तो अभी बना लेना, मैं जैसे बना रही हूँ और उसके ऊपर फिर से मैं स्केच पेन चलाऊँगी पेंसिल से बनाने के बाद। एक्चुअली मैं ना भूल गई थी ये बनाना। अभी मैंने ना एक ग्लिटर पेपर लिया है, आप कोई भी पेपर ले लीजिए वो मतलब। और मैंने अभी इस पे मैंने ना 3 लाइन खींचा है थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, और उसको ना बाद में हमको कट कर लेना है। और मैंने ना इसके बाद क्या किया है, मैंने ना सर्कल भी बनाया है। 6 सर्कल बनाए हैं और 3 लाइन खींचे हैं, उसको हम बाद में कट कर लेंगे, ठीक है। अभी मैंने ना ग्लू इस्तेमाल किया यहाँ पे, तो मैं वो मटकी के ऊपर के साइड पे ना ग्लू लगा रही हूँ। तो आपको भी ऐसा लगाना है। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसके बाद मैं कॉटन लेती हूँ और उस कॉटन को ना ग्लू के ऊपर चिपका देती हूँ। ऐसा कॉटन को दही बना दिया मैंने, तो आपको भी वैसा ही करना है, कॉटन को दही बना देना है। देखिए मैंने कॉटन लिया है और उसको चिपका देती हूँ। और उसके बाद मैं करती क्या हूँ, उसके बाद मैंने जो जितना सर्कल शेप का ग्लिटर पेपर काटा था ना फोम, उसको भी बाद में मैं चिपका लेती हूँ। देखिए मैं कैसा चिपकाती हूँ, ठीक है।
गाइस मेरा रेडी हो गया ये मटकी वाला स्पेशल दही अंडे का क्राफ्ट और आप जैसे कि देख ही सकते हैं बहुत क्यूट लग रहा है।